A general description we have already seen about the layers, some terminologies, and the networking parameters, and general description of protocol stack. Now let us start data link layer, which is chapter 5 in top-down approach, 6th edition or before 6th edition. In 7th edition, I think it may be 6th chapter, I do not know, 7th edition. Okay, so it's 5th chapter in top-down approach. And as I said that we'll be starting in a reverse order. If you want to differentiate in top-down approach and the way we teaching bottom-up approach, the difference is that in bottom-up approach, what we do, we first try to see the small components and then connect them and then try to see how the things are working. And in the reverse approach, we take the first that how the message or mail is transferred, how it looks over the internet, and how the then we try to find out where it goes in the components, and then try to explore what is happening with that message when it is traveling to the lower components. Okay, so let us see data link layer. As we have seen that in link layer, create frames and medium access control is required. So why we need medium access control? Okay, in link layer we'll be seeing two things. So one is which is known as medium access control, and which generally we'll be seeing. The other portion is logical link control. Okay, so let us see this medium access control. Actually, whenever a particular medium on which the data is to be transferred is a shared medium, then only the question of controlling the access of a medium comes. Okay, and as I said that the internet resources are shared resources, so the medium on which we are trying to do the transfer is also a shared medium most of the time. If you remember, I told you that link layer is a point-to-point protocol. That means we are trying to transfer the connected nodes which are connected through a link, directly connected through a link. So we are trying to see how the packet is transferred between these two nodes when they are connected directly. Okay, so as I said, it is a shared link. So link is shared. If you remember, I told you the concept of packet also emerged from the sharing of the link, and the idea that there would be no central controller when we are trying to share the resources. And because of that, we say that the idea of packet emerged, so that when any resource which is going to be shared, if somebody is accessing that resource, so he accesses that resource for a limited time period. And how much time period? The time period which is required to transfer the packet. And that was the basic idea for creating the packet. Okay, and so that the system remains distributed. No central control is there. Okay, so the link is also a shared link.
the medium is also a shared medium, so that medium access control is required. So for sharing the medium, there are generally three ways. We will be seeing a particular technology, okay, but as a general method, let us see when we have to share the link. There are three ways for. One is which is known as channel partitioning. Channel partitioning. In which the other one is random access. Random access. Okay. How the medium is accessed and how the question of sharing the medium is solved. अगर एक से ज्यादा नोड मीडियम को शेयर कर रहे हैं तो कैसे शेयर करें, क्या रूल लगाएं शेयर करने का. तो ये तीन क्राइटेरिया जनरली है कि तो आप चैनल को पार्टीशन कर दीजिए, मतलब अलग अलग चैनल बना दीजिए, and dedicated channels are used between source and destination. Okay. The other one is random access, in which you say कि भाई आप access करिए जिसका भी मन करे तब. And the third idea is by turn. Okay. In computer network, we would be seeing this random access, and we'll be discussing in MAC layer, in link layer, this random access technology in detail. In channel partitioning, which is generally used when we use for telephone accessing, like can do 2-3 things. Frequency division multiplexing, in which channel, suppose the channel is of 20 kilohertz or megahertz. So the total bandwidth is, so it has been divided into say 4 kilohertz channel. So how many there would be? 5 channels, right? So if 2 nodes want to, or what will happen at a particular time, maximum 5 nodes or 5 nodes can do the transmission as one channel has been allocated to. The other one is known as time division multiplexing. Now, multiplexing means एक से ज़्यादा use कर रहे हैं, और time division में क्या है कि the time has been divided, like say station 1, station 2, station 3. Okay, so to all these 3 stations, the time has been divided. कि भाई S1 will use, S2 will use, S1 will use first, then S2 will use, and then S3 will use. Okay, so for a limited time period. And then at the receiving end also, that receiver R1, R2, R3, they are. Okay, so this is how the time is divided. And the third is code division multiplexing, CDMA. Okay. The other one is random access technology.
In random access, there are 3 protocols generally. The one which is known as Aloha. Random access means कि मीडियम जो है आपका शेयर्ड मीडियम है, कोई डिवीजन नहीं कर रहे मीडियम को, हम किसी तरह भी डिवाइड नहीं कर रहे. क्या कर रहे हैं कि मीडियम शेयर्ड मीडियम है एंड एनीबडी हु वांट टू एक्सेस द मीडियम, अगर 2 से 1 से ज्यादा लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं मीडियम को, तो कोई भी जो एक्सेस करना चाह रहा है ही इज अलाउड टू एक्सेस द मीडियम. उसके आगे क्या होगी प्रॉब्लम, वो एक अलग मसला है. ओके, सो रैंडम एक्सेस मींस anybody at any time want to access the medium, he is allowed to access the medium. Aloha इसको बोलते हैं जिसमें कि आप तो जब जरूरत है तब आपने ट्रांसमिशन कर दिया. दूसरा है जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सिस्मा सीडी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस कोलिजन डिटेक्शन. ये ईथरनेट में यूज होती है. और सिस्मा सीडी एलोहा का ही एक इम्प्रूव वर्जन है. एलोहा कहता है कि एनीबडी एकदम रैंडम एक्सेस है, उसमें कोई परवाह नहीं है कि मैसेज ट्रांसफर होगा कि कितनी देर में होगा, कि होगा कि नहीं होगा. ओके, एनी टाइम इफ यू वांट टू एक्सेस यू कैन एक्सेस द मीडियम. सिस्मा सीडी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्शन. एंड द अदर वन इज CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन अवॉइडेंस. ये आपका वाईफाई में यूज होता है. ओके, और ये इथरनेट में यूज होता है. तो सिस्मा सीडी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में. वाईफाई को नहीं, विल नॉट टेक अप वाईफाई. मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा डिटेल कि हाँ यार थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है दोनों में, और आइडिया थोड़ा सा दे दूंगा. डिटेल में नहीं जाएंगे वाईफाई में, क्योंकि आपका 7th सेमेस्टर में वायरलेस नेटवर्क का कोर्स ऑलरेडी है, तो वहाँ पे वाईफाई डिटेल में पढ़ देखेंगे. ओके, बट क्योंकि सिस्मा सीडी और सिस्मा सीए में बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही माइन्यूट डिफरेंस है, तो वो मैं सिस्मा सीडी जब पढ़ा हूँ तब अभी हम लोग सिस्मा सीडी ही पढ़ेंगे, तब विल ट्राई टू टेल द डिफरेंस. और इसके बाद है थर्ड है बाय टर्न. मीडियम शेयर्ड है बट एनीबडी वांट टू यूज, देयर टर्न्स आर फिक्स. अब टर्न वहां पे भी देखिए फिक्स है, जैसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में भी टर्न फिक्स कर रहे हैं हम. बट क्या कह रहे हैं कि अगर S1 को यूज करना है, सो फ्रॉम से 10 to 10:15 का जो टाइम है, 10 to 10:15 AM, 15 मिनट के लिए S1 यूज करेगा. देन नेक्स्ट 15 S2, नेक्स्ट 15 S3, और 10 आप उसको मिनट कह लीजिए, सेकंड कह लीजिए, मिली सेकंड कह लीजिए, माइक्रो सेकंड कह लीजिए. हाँ, सो S1 विल यूज, देन S2 विल यूज दैट मीडियम, देन S3 विल यूज. तो वो भी बाय टर्न ही है, बट वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है. और वहां पर जो कंट्रोलिंग है, जनरली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जब हो रही है, तो कोई सेंट्रल कंट्रोलर चाहिए होता है हमको, सो दैट ही कैन एलोकेट टाइम टू डिफरेंट स्टेशंस व्हिच आर ट्राइंग टू एक्सेस द मीडियम. जो मीडियम को एक्सेस, मीडियम देखिए अब यहाँ कॉमन रिसोर्स हो गया जिसके ऊपर आप ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं. और क्यों एक ही बार में एक ट्रांसमिट कर रहा है, या क्यों हमें टाइम एलोकेट करना है, उसका रीजन बहुत सिंपल है कि मीडियम शेयर्ड है. अगर 2 लोग ट्रांसमिट करेंगे तो कोलिजन हो जाएगा सिग्नल का. सेम मीडियम पे एक ही तार पे, तार एक ही है लेकिन 4 लोग कनेक्टेड है तार से. तो अगर 4 लोग एक साथ ट्रांसमिशन शुरू कर देंगे तो तार के ऊपर सिग्नल अलग अलग स्टेशन के कोलाइड हो जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा. अब कोलिजन हो गया तो फिर समझ में नहीं आएगा कि जब 1 ट्रांसमिट किया है तो क्या है, 0 ट्रांसमिट किया है तो क्या है. तो रिसीवर को अगर समझ में नहीं आता है सिग्नल,
ट्रांसमिटेड सिग्नल 0 है या 1 है तो ट्रांसमिशन बेकार है फिर। कोई मतलब नहीं है उस ट्रांसमिशन का, और वो कोलिजन की वजह से सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाता है। You cannot understand the signal. The receiver failed to understand the signal, whether it is 1 or 0. So that is known as collision. So if more than one station will do the transmission simultaneously. Simultaneously का मतलब है एक ही टाइम पे अगर ट्रांसमिट करेंगे आप, अगर आपने ट्रांसमिट किया और दूसरा कोई कर ही नहीं रहा तब ठीक है, फिर दूसरे ने किया तब ठीक है। तो इसीलिए हम उसको एक आदमी ट्रांसमिट करेगा, ओनली वन इज अलाउड टू डू द ट्रांसमिशन। तो वो टाइम डिवीजन में वहां पे भी टर्न है और कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोलर है। यहाँ पे बाई टर्न में क्या है कि बाई टर्न में यहाँ ये है टोकन रिंग। तो टोकन रिंग की टेक्नोलॉजी अब बहुत पुरानी हो गई है, ऑब्सलीट भी है आजकल, बट इन द एंड प्रॉब्ली आई मे बी ट्राइंग टू टेल यू इन वेरी ब्रीफ अबाउट द टोकन रिंग। और टोकन रिंग है, इसके साथ एक टोकन बस भी होता है, टोकन बस। ओके, सो टुडे let us start with this Ethernet of SISMA CD. Okay, यहाँ से शुरू करते हैं। तो Ethernet से शुरू करते हैं और जो हम लोग डिस्कस करेंगे Ethernet है, फिर वाईफाई है, टोकन रिंग, टोकन बस, और ये जब है शेयर्ड लिंक है। एक लास्ट में हम लोग प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे विच इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अभी एंड में ऑफ द लिंक लेयर विल बी सीइंग दिस पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पीपीपी प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ये जो लास्ट हॉप है, जनरली जब आप कनेक्शन लेते हैं फ्रॉम आईएसपी, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आप जब भी कनेक्शन लेते हैं तो वहां से आपकी मशीन तक के हॉप को हम बोलते हैं लास्ट हॉप है, लास्ट माइल, लास्ट हॉप। तो जनरली जो लास्ट हॉप वाला कनेक्शन है फ्रॉम आईएसपी टू द सब्सक्राइबर, ओके, तो जो लास्ट हॉप है, दिस इज most of the time is on PPP protocol. It's a point-to-point protocol. The medium is not a shared medium. It's a dedicated medium, point-to-point. Okay. So we'll be seeing this point-to-point protocol, which is generally used to provide last mile connection, last hop connection. Subscribe, अगर आप अपने घर पे आपने किसी ISP से connection लिया हुआ है, then that connection is working on PPP most of the time. So PPP एक प्रोटोकॉल हम लोग स्टडी करेंगे लिंक लेयर पर, सिस्मा CD, ईथरनेट ये देखेंगे, वाईफाई थोड़ा सा जरा सा, और लास्ट में जब लिंक लेयर खत्म करेंगे तो थोड़ा सा टोकनिंग बता दूंगा ब्रीफ में कैसा है। So we'll see these protocols, और दो कंपोनेंट हम लोग देखेंगे, एक हब और एक स्विच, है ना। हब ब्रीफ में और स्विच डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, which is a component which is related to link layer. हब एक्चुअली फिजिकल लेयर component बोलते हैं हम लोग। Generally hub is considered at physical layer and switch is considered at link layer. Okay. तो ये इतना देखेंगे लिंक लेयर में। So now let us start with Ethernet. किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। चलिए तो we'll start with Ethernet.
SISMA CD or Ethernet. Before that, let me tell you that if you remember, I told you that most of the internet protocols in TCP/IP are the standard of the protocol has been defined by Internet Engineering Task Force, and it is in the form of RFC, request for comment. Okay, different protocols. But here at link layer, especially the Ethernet, Wi-Fi, the standard has been the protocol standard is at IEEE standard. Okay, so these generally some protocols which are at link layer, they are defined through IEEE. There was a working group which was known as 802. 802 working group has given different specification for protocols like Wi-Fi, for Ethernet, for token ring, for token bus. Okay, and there are some numbers are there. So 802 point SISMA CD, or I should not say that SISMA CD is a protocol. SISMA CD is not a protocol. Ethernet is a protocol, or standard IEEE standard 802.3. So Ethernet or 802.3, they are generally used interchangeably. Okay. Although there is some minor difference in Ethernet and 802.3, but anyway, at this moment, we think that 802.3 or Ethernet, both are used interchangeably. So we'll be seeing 802.3, okay, which is Ethernet. The basic idea of Ethernet, as any protocol is generally suggested on a particular infrastructure. So 802.3, our Ethernet protocol has been suggested over a bus topology. So bus topology was something like this. There was a bus, a cable which was a yellow color cable, and on this cable a drop wire was used to connect a node N1. Connector was used at this point, and then connecting another node and two. Then connecting another node and three. And connecting node and four. Maximum 256 node could be connected over this. Okay, and four. This is N4, sorry. And this was N3. So this was a bus. Ethernet was suggested on bus, and the transmission speed of Ethernet initially was 10 Mbps. Okay. This was a yellow color cable and a thick cable. We used to call it a thick yellow color cable. Okay, a copper cable, and this connection was through a drop wire to nodes N1, N2, N3, N4. The maximum length on which this bus could be, that was 2500 meter. 2500 meters. Okay. That was the basic architecture on which 802.11, 802.3 was suggested. If I was telling that, okay, IEEE 802 group
has given different specification. 802.3 is for Ethernet. And then you have 802.11, which is for Wi-Fi. Okay, these are two most popular these days. Some time back, the token ring was also popular, which is known as 802.4, and token bus was 802.5. Okay, so these were token ring and token bus, and this is Wi-Fi 802.11. So let us see this 802.3, which was proposed on a shared link. And now let me just draw it instead of this, like this, that is for a bus, and nodes are connected to bus N1